Hello students, most welcome to the course Applicable Mathematics Third. So today we are going to record your first lecture. So I will discuss today about the relations, equivalence relations and equivalence classes. These things I will going to discuss. So first आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हमारे पास सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और सबसेट क्या होता है, कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, इसके बारे में बी नो वेरी वेल। सो मैं आपको उसके फॉरवर्ड उसके आगे की चीजों को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक्स आई थिंक यू नो। सो today we'll discuss about the relation on a set and then we talk about the equivalence relations and so on. Okay, so let's begin journey of today's lecture. So I'm sharing screen to you. Okay, so here topic is written already, the equivalence relation. Okay, so let's begin. So what is the relation on a set? है ना, तो first we talk about the relation on a set. On a set. So if we are taking a set A, so that will be a subset of A cross E. We know about the Cartesian product of two sets. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A and B, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है that is defined in this way that we have a ordered pair x comma y such that this is x from A and this is y from B, है ना? We know this thing. This is y from b. So this is the Cartesian product defined. So if you are saying A cross A, it means you are taking both the element from the same set x comma y such that this is x and y from the set A. So this is the Cartesian product of A with A. Okay. Okay. So let's define here. So if I am taking a set A, be any set, and I'm taking here it's a non-empty set. Set, then any subset any subset of the Cartesian product A cross A is called a relation. It's called a relation on set A. Okay, so this is basically a subset. It means we have any condition, any type of equation which pair we are taken from A cross A. Okay, so that is called relation. So we have some particular relations like empty relation and universal relation. Okay, so we have some particular relation. So we just write here some particular relations on a set A. If I'm just taking set A. Okay. So we have here, so I'm taking a set, suppose that A, let A be any set. Non-empty set. Okay. So let be any non-empty set. Okay. So first we discuss about the empty set. Empty set means we have a condition, we have a relation, but we don't have element which satisfy that condition. तो इस टाइप के जो relations होंगे that will be called the empty relation. And you know that empty is also a subset of every set.
तो इसलिए इम्पटी सेट वहां पर है। यू बिकॉज हमने जो रिलेशन डिफाइन करा दैट इज सम सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ना, so it means empty set is also a subset, then we is called also a empty relation. So that is your empty relation. Okay, so let's define it. So as we know that is phi is the subset of A cross A. So this phi is a relation on A. Okay, and this relation is called the empty relation. Relation on A. क्लियर? सो अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल यू कैन हैव जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट, तो हम फॉर एग्जांपल कंसिडर some relation on A. Consider the relation R on the set A which have element 1, 2 and 3 is given by this is your R, and simply we have suppose that A comma B such that A and B is belonging to A, and we have defined this A is related to B if A plus B is just equal to 10. मतलब sum of two numbers from the set is 10, but here you can see there is no element, their sum will be 10 in A. ओके, तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे, इफ यू आर राइटिंग हियर A क्रॉस A here, so what you have the elements, this is 1 is related to 1, 1 comma 1, 1 comma 2 and 1 comma 3, and then you just start with 2, 2 comma 1, 2 comma 2, and this is 2 comma 3, and then 3 comma 1, 3 comma 2 and 3 comma 3. So this is Cartesian product of A with A. Clear? So and we can see, we note that no pair from A cross A in A cross A satisfies the condition जिससे हम रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, दैट condition is A plus B just equal to 10. It means R have no element, but condition is there, relation is there. Okay, so you can see, so this R is empty set, therefore this relation is called empty relation. Therefore R is the empty relation. समझ गए कि हमारे पास रिलेशन तो है बट कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इस तरीके का जो रिलेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड empty relation. Then we will talk about, you know that every set is the subset of itself, है ना, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो अगर हम पूरा कलेक्शन ले लेते हैं A क्रॉस A, होल कलेक्शन ले लेते हैं, तो दैट आल्सो फॉर्म अ रिलेशन, एंड दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें सारे के सारे पेयर A क्रॉस A के आ जा रहे हैं,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो लेट्स डिफाइन इट आल्सो। Universal relation. Okay. So as we know, you can say, as we know, that is A cross A is a subset of A cross A. So you can say this A cross A is a relation. The relation on A, and this relation is called universal relation. It's called the universal relation. Relation on A. Okay. So for example, if you take a relation, consider a relation on the same set. Okay, a ही set हम ले लेते हैं. So let's write here, consider a relation, the relation R on the set A, that is your 1 2 3, is given by, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं रिलेशन. You can say this is R is the pair, those pair A comma B, such that all the elements from A, we know that, and the modulus of A minus B, modulus of A minus B is non-negative, is greater or equal to 0. And we know that कि कोई भी पेयर ले ले, अगर उनका डिफरेंस लेते हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो हमेशा वो नॉन निगेटिव आता है. इसका मतलब एवरी पेयर फ्रॉम ए क्रॉस ए विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना. तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन बनेगा आर, दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स from A cross A. So you can just write here, we note that all pairs A comma B in A cross A satisfy this condition, A minus B is greater or equal to 0. So this R contains whole A cross A. So R is the whole set A cross A. Clear? Therefore, you can say, therefore, this R is the universal set universal relation. Okay, got it? So here the empty relation and universal relation, that is always exist, है ना. तो यू कैन से दीज आर ट्रिवियल रिलेशंस, है ना. तो इनको कभी कभी किसी टेक्स्ट बुक में ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी बोल. ट्रिवियल का मीन्स दे आर already in existence and we know about it. So both empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relation. Okay, got it? So next we talk about the identity relation. So identity relation is that every element related to itself only. Okay, so that is the
आइडेंटिटी रिलेशन, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, so what are the identity relations? So the relation is defined in this way. इसको हम नोटेट ऐसे करते हैं, आई विथ ए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। ओके, so we have all the pairs in this way. A is related to A for all A in A। ठीक है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता हूं बस, दिस इज ओनली, है ना, ओनली इज दैट इज कॉल्ड, is called the identity relation, called the identity relation on the set E। क्लियर? सो एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। इट मीन्स देर इज one is related to one, two is related to two, and three is related to three only. Okay, we are not going to say that one is also related to two, that not will be there. So note, you can just have that in identity relation, every element is related to itself one. Okay, so if you are writing some example for it, you can easily see on this. For example, if you are just taking A, as already we had taken, this is if A is 1, 2, 3, there are only three elements. Then the identity relation on A is given by this is relation identity is defined as 1 comma 1 pair is there, 2 comma 2 is pair there, and 3 comma 3, no other pairs will be there, there only three pairs will be defined. Okay, so this is the called your identity relation. Clear? So 1 comma 1. Okay, got it? Understood? Okay, just a second. Okay, so next let's we talk about the types of relations, है ना। ये कुछ पर्टिकुलर रिलेशन थे हमारे पास, जैसे कि इम्पटी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, और आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो दीज आर रिलेशंस ऑन अ सेट ई। ओके, तो वो हमने डिफाइन कर लिया। लेट अस डिस्कस सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, just a second. Types of relations on a set. Okay, so if I'm just taking R is a relation, तो उसको हम किस टाइप का बोलेंगे? let R be a relation on a set A, on a non-empty set A, then
then this R is called a reflexive relation. We have three types of relation, that is reflexive, symmetric, and transitive. So first we call it reflexive relation. Reflexive relation, if and only if and only if this is A is related to A, it means every element is related to itself, okay, from the set A. A is related to A. A. Yeah, you can say that is the pair A comma A is in R for all A belonging to A. So दो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, वो हमने देखा था, आइडेंटिटी रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इजिली वी कैन सी दैट एवरी पेयर ए कमा ए इज देयर. ओके. But empty relation is not a reflexive relation, because in the empty relation there is no pair is present. Okay. एंड यूनिवर्सल रिलेशन टू, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर तो सारे पेयर्स आते हैं, उसमें 1,1, 2,2 एंड 3,3 भी आया था. तो यूनिवर्सल रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन and identity relation is the reflexive relation, but the empty relation is not a reflexive relation. Next is symmetric relation. A relation is said to be symmetric when symmetric relation if and only if and only if A related to B implies B is related to A. It means if the pair A comma B is present there, then B comma A pair should be there, है ना, वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए. तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड is symmetric relation. You can say this is A comma B pair is there, or this implies this is B comma A pair should be in R, and for all A comma B in A. Okay, so this is the symmetric relations. Let us define the third one, that is called transitive relation. Transitive relation. So if and only if this is A is related to B and B is A is related to B and B is related to C, this implies that A is related to C. Okay, so you can just say this simple. You can say if the pair A comma B is there and B comma C is there, A comma B is in R, and this B comma C pair is in R, then there must be A comma C pair in R. Implies that is your A comma C in R for all A, B, C in, just second. Okay, so this is A, B, C in A. Okay, so this is your transitive relation. अब ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोला है, दैट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. In that relation, that type of relation is called reflexive relation. Okay,
सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोला, इफ ए कामा बी implies b comma a, it means that if the pair a comma is present there then b comma a pair should be there. अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा. बट अगर a कामा b प्रेजेंट नहीं है तो b कामा a सर्च करने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दैट विल बी सिमेट्रिक. तो इफ a कामा b प्रेजेंट देन b कामा c. तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो रिफ्लेक्सिव मीन्स, अगर अगर हम यहां पर हम कहें कि नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव. सो इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें, है ना. अगर मान लो आपके पास एक रिलेशन आता है, उसे चेक करना है को रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं. ठीक है. तो अगर हम रिफ्लेक्सिव है, इट मींस इफ एंड ओनली इफ दैट एवरी पेयर ए कमा ए इज प्रेजेंट देयर, है ना. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. सिमेट्रिक है तो हमें क्या देखना है, इफ ए कमा बी इज देयर देन बी कमा ए शुड बी देयर. ओके. एंड ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कमा बी प्रेजेंट and b comma c present then a comma c should be there. It means a related to b and b is related to c, then a should be related to c for the transitive relation. Okay. तो when a relation will not reflexive, वो कब नहीं होगा. तो not reflexive means if there exists an element, उसको नाम दे रहा हूं, सपोज दैट ए नॉट इन ए. कोई एक एलिमेंट मिल जाए ए के अंदर, such that this a naught comma a naught, it does not belong to this r, relation r. मतलब it means one element is there, at least one element in there in a which is not related to itself. इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज, सिंबल ऐसे काट देते हैं इसको. इट मींस नॉट रिलेटेड टू, है ना. सो दिस ए नॉट इज नॉट रिलेटेड टू ए. ठीक. तो अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखें, इफ आई एम ऑन द सेट ए जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर एक हमने रिलेशन लिखा दैट इज योर R1, और जिसके अंदर हमने लिखा 1 1 1 2, एंड दिस इज 2 2, एंड दिस इज 3 3, and we have this is 4 1 and 4 4. और एक रिलेशन हमने और लिखा दैट इज योर R2, जिसके अंदर हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 एंड 2 1 एंड 1 2. तो यू कैन सी क्लियरली कि फर्स्ट वन इज reflexive because 1 1 pair is there, 2 2 is pair, and 3 3 and 4 4, that every element is related to itself is present there. It means this is a reflexive relation. Okay. But here you can say 1 1 is there, that is okay, 2 2 is there, 3 3, but 4 4 is not there. So it means if there exists an element a not in a which is not related to itself, है ना. It means a naught is not related to a naught, है ना. तो a naught is not present in R, है ना. तो एक एलिमेंट मिल गया, दैट इज. और यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, 4. एटलीस्ट एक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक एलिमेंट हमको मिल गया which is not related. If every element related to itself, that relation will be reflexive, otherwise not. Okay. So this is not reflexive. Okay, this is not a reflexive relation. Okay. So next we talk about when a relation is not symmetric relation, है ना. उसको भी देख लेते हैं थोड़ा. तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब नहीं होगा. सो थोड़े से लिए पहले तो हम सिमेट्रिक की कंडीशन देख लेते हैं.
नॉट सिमेट्रिक, उसमें क्या बोलता है सिमेट्रिक में, इफ ए कामा बी इज प्रेजेंट देयर देन बी कामा ए शुड बी देयर। इट मींस ए कामा बी, मतलब ए कामा बी इज implies बी कामा ए। ओके, तो if A is related to B, we know that for symmetric, if A is related to B, then this implies B is related to A. But अगर A B से रिलेट करता हो बट B A से ना करता हो, मतलब इट मींस ये इम्प्लाइजेशन, मतलब ये हमारे पास कंडीशन है, दिस इज योर इफ, दिस इज हाइपोथेसिस, दिस इज कंक्लूजन। तो whenever this will exist, दिस डेफिनेटली विल एग्जिस्ट। बट अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो और ये एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो देन वी कैन से दिस इज नॉट सिमेट्रिक, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस। तो इफ वन पेयर ए कामा बी इज देयर बट बी कामा ए इज नॉट देयर, देन वी कैन से इट इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज अगर वो सिमेट्रिक होता तो डेफिनेटली बी कामा ए शुड बी देयर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हमको एक ऐसा पेयर मिल जाए, ए कामा बी इज प्रेजेंट देयर बट बी कामा ए शुड नॉट देयर, है ना, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सो so here for the condition is not symmetric, so if there exists a pair a comma b in R, but but this b comma a is not in, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, you can just write in this way। So if there exists a pair a comma b in R, but for that, but this b comma a is not in R, is not exist in R, then we easily say this is not a symmetric। ओके, सो एक रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी। ट्रांजिटिव की जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो क्या है, कब होता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड दिस बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दिस इज ए इज रिलेटेड टू सी। तो अगर हमारे पास ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, बट ये नहीं फुलफिल हो रही है, देन वी विल ओनली से दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, अदरवाइज वी से इट इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो बट ये कंडीशन ना फुलफिल हो, लास्ट वन कंक्लूजन ना है, हाइपोथेसिस तो है, तो अगर हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हाइपोथेसिस अगर एग्जिस्ट करती है तो कंक्लूजन होगा ही होगा, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है बट कंक्लूजन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वे टू चेक नॉट ट्रांजिटिविटी। ओके, अदरवाइज द रिलेशन विल बी, अगर ये दो हाइपोथेसिस ही नहीं है, ठीक है, तो कंक्लूजन की हम बात ही नहीं कर सकते, एंड दैट केस द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, है ना, वी विल नॉट। तो टू नॉन ट्रांजिटिविटी के लिए ओनली दी वी आर फिक्स दैट इफ द hypothesis exists there but the conclusion is not we are getting, in that case we say the relation is not transitive। clear? so यहाँ पर you understand well है क्या? तो it means simply if A is related to B and this B is related to C, but this A is not related to sorry, not related to C। Okay, so this is about your types of relations। okay, let us discuss some examples। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। so
examples. So first example is what? That I'm just taking triangles. Okay. So let A be the set of all triangles. Set of all triangles. Set of all triangles drawn in a plane, and this is RB with the relation इज सिमिलर टू, है ना, जो रिलेशन है वो हमारे पास है इज सिमिलर टू ऑन ए. Then let us check about R. So R is R. So first we can have about the reflexive. Is it reflexive? You know that every triangle is similar to itself. It means that every pair, every triangle is related to itself. So it means it is a similar. So you can just it is similar. एक सेकेंड, सेम कलर से लिख लेते हैं. ओके, तो इजीली यू कैन सी दैट इज इट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आपसे अगर रीजन पूछे कि क्यों, तो यू कैन आल्सो डिफाइन द रीजन दैट एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना. एवरी ट्रायंगल ट्रायंगल इज सिमिलर टू itself. So you can just say that A is related to A for all A is in A. Clear? Next we can easily say it is symmetric too. क्योंकि अगर if a relation if a triangle is similar to other, then other will be also similar to first one. Okay, so this is also similar. You can just say symmetric. Let's define the region. So if you can say if a triangle A is similar to a triangle B, then you can easily see that B is also similar to A. Then the triangle B is also to the triangle A. So you can easily see, say that, you can see, say that if A is related to B, and this implies B is related to, clear? Or we can say the if A comma B is there in R, then B comma A will be there in R. So this is the symmetric relation 2. What about transitive relation? So this relation is also transitive, we can say.
transitive relation. So we know that if one triangle is similar to other and other is similar to third one, then we have your that is similarity क्या होता है कि जो angles होते हैं between adjacent angle will be same in a similar triangles, है ना? तो एक ट्रायंगल है उसके एंगल्स किसी दूसरे के इक्वल है, दूसरे के किसी तीसरे के इक्वल है, इसका मतलब आपस में तीनों के ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आपस में तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रांजिटिविटी इज आल्सो होल्ड देयर। ठीक है, तो यू कैन आल्सो से अबाउट द रीजन। So if I'm taking three triangles A, B, C, and we are saying this is if triangle A is similar to triangle B, and this B triangle and B and triangle B is similar to triangle C, then you can say by evidently triangle A will be similar to triangle C. A is related to B and B is related to C. This implies A is related to, clear? So similarity of triangles is an reflexive, symmetric and transitive relation. Is it clear? Okay. एक और रिलेशन पढ़ते हैं. Let us see another example 2. So here we just taking here, let A be set of all straight lines. Okay. So let A be the set of all straight lines. A के अंदर सारे स्ट्रेट लाइंस का कलेक्शन है इन अ प्लेन. Lines drawn in a plane and the relation R and R be a relation. कैसा रिलेशन है? बिटवीन द लाइंस इज परपेंडिकुलर. एक लाइन किसी दूसरे से रिलेट करेगी इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर टू ऑन ए. ओके, देन आर इज. सो फर्स्ट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होती ना. ठीक है, तो इट मीन्स अ लाइन इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ. वो खुद से रिलेट नहीं करेगी. इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो इफ अ लाइन ए इज रिलेटेड टू बी, it means A is perpendicular to B, then B is also perpendicular to A. Okay, it means this relation is symmetric. Okay, what about transitivity? अगर A is related to B मतलब A is perpendicular to B and B is perpendicular to C. So in that case A and C will be parallel. It means it is not transitive too, है ना? तो ये रिलेशन जो है तुम्हारे पास खाली सिमेट्रिक है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको जरा लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। कैसे? रीजन अगर इसका हम लिखना चाहें क्यों, यू कैन इजिली से since a straight line since a straight line is not perpendicular to itself, not perpendicular to itself. Okay, so you can easily say that is A is not related to A. ये सिंबोलिज्म होता है नॉट रिलेशन के लिए, ये बनाते हैं हम लोग फॉर नॉट। अगर हम यहाँ पर जैसे जो अगर पार बनाते हैं तो इसको ऐसे आप काट दीजिए, तो ये होता है नॉट रिलेटेड टू ए, फॉर ए इन। ओके, सेकंड इट इज सिमेट्रिक टू, सिमेट्रिक तो होता है तो यूजुअली यू कैन हैव से इट इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक रिलेशन, तो लेट्स बी है, so for A and B is in A, if A is perpendicular to B, then you usually say then B is also perpendicular to A. So A is related to B implies here that B is related to A. So this is the relation is symmetric and it is not transitive, वो भी हमने बताया क्यों। Not a transitive relation, not a transitive relation, I'm sorry, एक सेकेंड, not a transitive relation. So why? If you are going to say about the region, so A and C will be पैरेलल है ना, यूजुअली सी। अगर हमने कहा, अगर इसको हम इन हमने कहा कि A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब है एक हमने लाइन लिया, दिस इज योर A, दिस इज द लाइन A, okay, and another line is B, suppose that this is your B, okay, now another line C is also perpendicular to B, मतलब A is perpendicular to B and we have another line C which is perpendicular to B. So I'm just writing this is your C, suppose that this is your C. So now you can see that A and C is parallel, not perpendicular. और रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब A is related to B and B is related to C, but A and C is not related to each other. Okay, so this is not a transitive relation. We just write here, for example, so for A, B and C, which is in A, so if
A is perpendicular to B, and this is B is perpendicular to C, then A is not perpendicular to C. In fact, you can say they are parallel to each other, है ना? लिख भी लो ताकि आप हालांकि पता है तो in fact you can say A is parallel to C. Okay, so this implies you can say A is related to B, that is okay. B is related to R, that is also okay. Does not imply that is A is related to C. Got it? So it means the perpendicular relation is not transitive and it is also not reflexive, but it is a symmetric relation. Okay. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और हमारी डिफिनीशंस क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट third number example. So let A be the set of all real numbers. हम रियल नंबर सेट के ऊपर काम करेंगे. All the real numbers and R be the relation less than or equal to. मतलब कोई भी नंबर किसी दूसरे से रिलेट करेगी विच इज आर लेस और इक्वल टू. You can say this is less or equal to symbol on A. Okay, तो रिलेशन है कि A is related to B if A is less to B or it is equal to B, then it will be related to B. Then what about reflexive relation? Yeah, equality is there ना, तो A will be related to A is less or equal to A. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये इक्वलिटी है ना इसमें और है, ध्यान देना. ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं. जस्ट जस्ट सेकंड. बट इज ओके, दिस ओके. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस मीनिंग व्हाट इज इट मीन्स लेस देन और इक्वल टू. तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू. ठीक, और जो और स्टेटमेंट होता है इसमें एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तो होल स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है. ठीक, इफ इट इज ट्रू it is true, then it is true. If it is true, it is false, it is true. If it is false, it is true, it is true. And if both are false, then only the false statement is there. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो और स्टेट में अगर हम लिखें इफ आई एम राइटिंग 1 इज लेस और इक्वल टू 1, तो इट मीन्स दैट अगर इसको ओपन करके लिखें तो 1 इज लेस देन 1 और 1 इज इक्वल टू 1. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 1 इज नॉट लेस देन 1 ना, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो होल स्टेटमेंट विल बी ट्रू. इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है. 1 इज लेस और इक्वल टू 1, तो उनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है. ओके, तो सिमिलरली जब हम रिफ्लेक्सिव को बात करने जाएंगे तो यू कैन राइट हियर ए is less or equal to A for all A. You can able to write.
दिस इज ए फ्रॉम द सेट ऑफ रिलेशन, है ना, रियल नंबर्स, है ना, तो आर को हम ऐसे लिखते थे। तो एज लेस और इक्वल टू ए, बिकॉज इसको जब हम ओपन करेंगे तो वी हैव टू स्टेटमेंट, एज लेस देन ए एंड एज इक्वल टू ए। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द रियल नंबर्स। तो ये टुगेदर वी विल से दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस इज होल्ड्स फॉर एवरी रियल नंबर। तो दिस इज अ रिलेशन, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। बट इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ, and also you can say one is related is less than 2, it means one is related to 2, but 2 is not less or equal to 1, है ना। 2 is not लेस देन 2 और इक्वल टू 2, इक्वल भी नहीं है और लेस देन भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। या इट इज ट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो उसके लिए भी देखेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले देन आर इज रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फर्स्ट इज आर इज आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर। तो रीजन फॉर दैट, लाइक राइट द रीजन हियर, क्यों होता है, क्योंकि हमने भी समझाया वही चीज है, दैट फॉर एवरी, फॉर ए बिलोंगिंग टू ए, ए here a is the set of real numbers, है ना, सारे के सारे रियल नंबर है। दिस इज a is less or equal to a, this is a true statement। yeah, you can say this is a is related to a because equality is also there na। okay, next, next we can easily see it is not a symmetric relation, वो भी हमने बताया, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक पेयर हमको ऐसा मिल जाए जो कि वन का मतलब ए कामा बी वहां पर है बट बी कामा ए प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम कह देंगे कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर 1, 2 ले सकते हो एज ए रीजन अगर हम इसका लिखना चाहें। तो यू कैन हैव फ्रॉम हेयर, यू कैन जस्ट हैव फॉर 1, 2, फॉर 1, 2 you can easily see in a real numbers, and you know that this is 1 is less or equal to 2, and अब 1 is less than 2 not equal to 2, so one statement is true, it means you can easily write this 1 is less or equal to 2, this is 1 is related to 2, but you can easily see this is 2 is not less or equal to 1 is not true, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। so you can just say this is 2 is not related to 2 is not related to 1, है ना। तो इसका मतलब 1, 2 तो पेयर होगा वहां पर प्रेजेंट होगा, बट 2, 1 पेयर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव, या इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर। सो let's write the region clearly, you can say a is less than b, less or equal to b, and b is less or equal to c, then you easily say that a is less or equal to c। so for A, B, C in A, ठीक है, A is less or equal to B and this B is less or equal to C,
ठीक है, या यू कैन से दिस इज एंड दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। अगर हम इसका मतलब ये है कि ए बी सी से लेस और इक्वल टू होगा, तो दिस इम्प्लाइज ए इज लेस और इक्वल टू सी। मतलब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा हुआ ना, है ना। सो यू कैन जस्ट हैव easily say this is A is related to B and this is B is related to C. This implies A is related to C. So this is the definition for transitive relation. तो ये रिलेशन जो लेस और इक्वल टू है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और अब आप हमको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि हमारे पास रिलेशंस को हम कब ट्रांजिटिव बोलते हैं, कब हम सिमेट्रिक बोलते हैं, कब रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, तो एक हम और एग्जांपल कर लेते हैं। तो लेट एस बी एनी नॉन इम्पटी, और इसका हम पावर सेट लिखते हैं, नॉन इम्पटी सेट, एंड आर बी अ रिलेशन, be a relation defined on power set of S, on power set of S. What is the power set? Collection of all the subsets of a set is called power set. By the on the power set, इसको ऐसे डिनोट करते हैं PS by, so a subset A of set S is related to B, A is related to B if and only if this is A is the subset of B। ये तभी रिलेट करेगा जब ए बी का क्या है, सबसेट है। फॉर ऑल ए एंड बी इन द पावर सेट। ओके, देन व्हाट अबाउट आर आर एच। सो थोड़ा सा जो बच्चे नहीं जानते हैं पावर सेट के बारे में, हम उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि हमने लिया एक सेट ए, 1 2 and 3 एलिमेंट इन दिस। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉसिबल हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं ए के, उन सबका कलेक्शन। तो ए के पॉसिबल सबसेट कौन कौन सकते हैं? एक तो इम्पटी सेट हो गया, सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, सिंगलटन 3 हो गया, ये इसके सबसेट्स हैं। फिर दो दो एलिमेंट्स को लेकर बना लो, 1 2 एंड 2 3 एंड 1 3, है ना, एंड 1 2 3 इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का भी। तो इनका जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट। दिस इज पावर सेट ऑफ द सेट ए। तो यहां पर इन्होंने कहा कि एस इज द सेट एंड पीएस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस, इज कलेक्ट पीएस इज द सबसेट। तो जो पीएस है, तो जो रिलेशन आर है, तो आर रिलेशन इज नथिंग, दिस इज द सबसेट ऑफ द पीएस क्रॉस पीएस। इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द सबसेट्स ऑफ एस, है ना, हम सबसेट्स ऑफ एस पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो एक सबसेट है, वो एक सेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए और बी दो सेट हैं, वो एक दूसरे से तभी रिलेट करेंगे इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है, सबसेट है ना। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, वो सेट है ना, बेसिकली दे आर सबसेट्स ऑफ एस, है ना। तो ए और बी will relate to itself if A is the subset of B. So this is the relation is defined here. Okay, आइए। तो it is is it reflexive? तो answer is yes, because a set is a subset, a set is a subset of itself। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, इसका मतलब वो सेट जो है खुद से रिलेट करेगा ही करेगा, जो कि पीएस का मेंबर है। तो यू कैन जस्ट से यस। सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, तो रिलेशन आर इज हियर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
reflexive relation. Okay, so रीजन दे देते हैं क्योंकि यू कैन सी कि हमारे पास a set is subset of itself. So for any member from PS, any element from power set of S, A is the subset of itself. ठीक है, यू कैन से दिस इज A is related to E. तो इसका मतलब है वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है. ओके, इट इज नॉट सिमेट्रिक. इफ A is the subset of B, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि B is the subset of A, है ना. अगर ए बी का सबसेट है तो ये तो जरूरी नहीं कि बी भी ए का सबसेट हो. ओके, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. दूसरा लिखते हैं नॉट सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, तो दिस इज रीजन. So region is for, you can say, if for two elements A and B, which is belonging to PS, and A is the subset of B, may not imply that B the subset of A. ये जरूरी नहीं है, ठीक है. तो you can just say that is A is related to B may not imply that B is also related to A. क्लियर. तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट symmetric. Okay. Is it transitive? Yes, it is transitive. If A is the subset of B and B the subset of C, then every element of A is also in C. It means A is the subset of C. Sorry. Okay, so is a transitive relation. So you can just have, what is the region? You can easily say for any sets A, B, C, which is subset of S, it means it's belonging to the power set of S, and A is the subset of B, and B is the subset of C. What meaning of that? It means every element of A is in B, and every element of A is in B, and every element of B is in C. इसका मतलब है कि every element of A is in C. It means A is also a subset of C. So this implies this is A is the subset of C. It means it is transitive relation. So you can easily say that if A is related to B and this B is related to C, and this implies this is A is related to C. Okay, so it means we are taking the power set of S and we are taking member from the PS. So a relation from PS to PS, it means it is a subset of PS cross PS. So वो relation A will be related to B if A is the subset of B. So this relation is transitive, reflexive, but not symmetric. Okay, so I think these examples helps you that understand the which relation is transitive, symmetric and reflexive, है ना. तो आप इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स को ट्राई करिए, खुद से एक्सरसाइजेस करिए. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. तो अगर कोई भी रिलेशन है जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक एक रिजल्ट का प्रूफ लिखना पड़ेगा. और क्योंकि हम लोगों का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना पड़ेगा, आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा, है ना. जो आपका इवेंट सेमेस्टर होता है उसमें
ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑड सेमेस्टर होते हैं उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपको कैसे लिखना है। आपने देखा होगा कि मैं चाहता तो उसको शॉर्ट में हम क्वेश्चंस को समझा भी सकते थे और हम आगे बढ़ जाते, बट हमने एक एक चीज वहां पर लिखी है। लिखी इसीलिए आप लोगों के लिए कि आप लोग एक नोट्स बनाइए, आपको स्टडी कैसे करना है एक नोट्स बनाना है। और जो भी चीजें हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं, स्क्रीन पे लिख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, रीड आउट करनी है, समझना है, एक बार समझना है, दो बार समझना है, लिख के देखना है खुद से, आंसर्स लिखने की हैबिट डालनी है। क्योंकि आपने जब हमारे लेक्चर्स आपने कर लिए और आपको चीजें समझ में आ गई, बट उनको आपको खुद से भी करना पड़ेगा, तभी चीजें आपको आ पाएंगी अच्छे से और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड मोस्ट वेलकम अगेन इन माय लेक्चर्स। और आप कमेंट करिए, आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और कैसा लगा लेक्चर्स, कैसे समझ में आए, उसका भी आप फीडबैक दीजिए ताकि और हम अच्छे से अच्छा आपको चीज़ों को दे सकें। और आप एक नोटबुक जरूर बनाएं, उसमें हर एक एग्जाम्पल को, हर एक डिफिनीशन को, जैसे मैं वहां पर नोट कर रहा हूँ वहीं से आप पूरा नोट करिए, प्रॉपर तरीके से आप एक नोट्स बनाइए। और इस तरीके से जब आप लर्निंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स समझ में आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, तो थैंक यू so much for today and we will meet in the next lecture. Thank you so much.